Good morning, everyone. I am Anukriti Chauhan, and I welcome you all on this platform of Samyak Civil Services and Samyak Civil Services in English, where we are going to continue with our series of weekly current affairs. So, guys, most of you all have not attended these sessions regularly. So, who all have not? This is a beneficial class for all of you, right? All we are going to do in this particular class is revise what we have done in the previous classes. But one more thing that we are going to do important in this particular class would be associated with what? This class particularly will be having some of the important questions which we will be forming today and discussing on Monday, right? Through these content, we will be forming questions today and we will be discussing those questions on Monday. So I hope this session will be a really helpful session for all of you. Let's begin our class today, guys. Also, please share this session with your friends too. Ask them to join. Like आज की क्लास में मैक्सिमम लर्नर्स लाइव होने चाहिए, तो जिन भी प्लेटफॉर्म्स पे आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर करो, उनको बोलो कि वो लाइव आएँ और इस क्लास को अटेंड करें, ठीक है। फिर उसके बाद में एक जो स्पेशल अनाउंसमेंट है सम्यक से एसोसिएटेड, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज की क्लास में. सो आस्क योर लर्नर्स एंड योर फ्रेंड्स टू जॉइन इन एज सून एज पॉसिबल. अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग. टारगेट, पेशल, अ वेरी गुड मॉर्निंग. अर्जुन जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग. यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग. हाँ जी, बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है. पेशल, अ वेरी गुड मॉर्निंग. हर्षिता, सूर्या, अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. Yes, so let's begin our session, guys. First of all, I would like to know that you all to know that this is a weekly current affairs series, right? We are going to discuss the weekly current affairs in this particular class. और अभी हम क्या देखेंगे मैं आपको बता देती हूँ, because it's important for you to note down, right? आज की क्लास में मतलब जो स्पेशल चीज है वो क्या है? Suppose for example, this is a topic. Topic is Yoga Day, right? International Yoga Day. Now, what can be the questions that can be formed from this particular topic? I will be telling you all those questions. So you can write those questions down, or you can make those topics a memorial concept. मतलब एक memorize it, and then we are going to discuss that on Monday. Is this clear? Clear है इतना? Yes. So now, can you all please share this video with your friends? इस इनिशिएटिव के लिए क्या आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं जी. सोनू, भरत, अ वेरी गुड मॉर्निंग. भैया वीकेंड आने वाला है, थोड़े एफर्ट्स आपके, थोड़े एफर्ट्स मेरे, कंबाइंड एफर्ट्स के साथ में वी आर गोइंग टू रॉक नाउ इन दीज करंट अफेयर्स क्लासेस. ओके. Also from July onwards there will be another initiative which is also very helpful for each and every one of you. Yes, let's begin. The first news is associated with Yoga Day only, right? अब योगा से associated क्या चीज है जो हमारे लिए important है, क्या content हमारे पास में था, what was the content that was available, and what are the things that are important? We are going to have a look at it, right? Yeah. Abhay, a very good morning. Okay. ठीक है, चलिए. अटल जी, a very good morning. Very good morning. Mamta, very good morning. चलो. So the first question that arises is when do we celebrate Yoga Day? First thing, किसी भी टॉपिक से ये 5 क्वेश्चन तो लिख ही लो, ठीक है. स्टैटिक नहीं बता रही हूं, मतलब ये मान के चलो who, when, what, where, how or why, right? These are the 5 questions that we have to cover up in each and every topic, right? So Yoga Day question was there, right? Who was seen in news? Who was the person who was associated with this time Yoga Day? क्या किसी special person का नाम आपके Yoga Day के celebration में आया? Then you need to mark that person down, right? You need to write that person down because it is important, right? Yes. Next, when do we celebrate? We have this date associated, that is 21st of June. 21st of June. So write the answer down. I will be just marking these points down. 21st June. What? International Yoga Day. What? It was International Yoga Day. Why is 21st June considered to be an important date? Why it is considered to be an important date? तो why में आप लिखेंगे? Because it is the longest day, right? Is that clear? Exactly. How we celebrated? By practicing yoga.
and there was a live session of Narendra Modi ji, right? Where was it? Where was that particular session? Let me know please in the comment section. Exactly, Mysore, Karnataka. It was the place Mysore, Karnataka, right? Yes, longest day of the northern hemisphere. Absolutely true, Harshita. So we can consider, मैंने northern hemisphere नहीं लिखा था, but आप लिख लीजिए. It's understood though. But very nice concept, Harshita. If it's clear, northern hemisphere के अंदर हम इसे longest day माने जाते हैं. How? तो how में लिख लो. By organizing what? A program. Now this is what we have to understand with reference to the current. ये हो गया current perspective. तो इसको लिख लेना. ये आपका perspective कौन सा है? This is the current perspective, right? And if I have to let you know about the static perspective, then that is also very important. Yes, ma'am. क्योंकि current important है, then the static GK is also very important. So what can be the static GK? One thing that we forgot in this particular is the theme also. International Yoga Day, when on 21st of June, we can refer to, if there is some important day, then we can refer to the theme also. And thank you so much, Surya, for that particular point, right? Yes, that theme was Yoga or Yoga for Humanity. This was the theme, right? Is this clear? Yes. Now we will go back to the static questions associated with yoga. What can be the static questions that can be formed of this particular topic, right? Static questions क्या क्या हो सकते हैं? First time कब मनाया गया? ठीक है? इसका कोई रेफरेंस था क्या? फर्स्ट टाइम जब हमने मनाया तो इसका कोई रेफरेंस था क्या? राइट? अभी तक का सबसे सक्सेसफुल योगा डे या कोई ऐसा स्पेसिफिक योगा डे जो आप लोगों ने देखा हो, है ना? एंड देन वर्ल्ड रिकॉग्निशंस इन योगा, if there is any recognition from India, right? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देख सकते हैं हम इसमें. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के साथ साथ में इज देयर एनीवन फ्रॉम द स्टेट contribution, then also it is important. देखो, एक हो गया लास्ट ईयर में नेशनल लेवल पे हमने रिकॉग्निशन देख लिया, ठीक है? मतलब नेशनली क्या क्या इन्वॉल्व थे, पीएम नरेंद्र मोदी जी थे और ये सब चीजें हमने देख ली. अब एक इंटरनेशनल बचता है, एक स्टेट लेवल बचता है. सो वन थिंग एंड टू थिंग दैट आर वेरी क्लियर इज एसोसिएटेड विद द योग इज एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन व्हिच वाज ऑफ द भवानी शंकर. Now this international recognition will be considered in the state contribution also. Bhavani Shankar from Nagaur for longest chakrasan, longest duration of chakrasan. Would you please share this session with your friends, guys, because this is a very important session, trust me. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अटल बिहारी जी क्या कह रहे हैं? मैम 2015 से स्टार्ट योग. एब्सोल्युटली ट्रू अटल जी. 2015 में सबसे पहले मनाया गया था और अगर हम बात करें 8th वाला आपके 2022 में देखा गया, राइट? यस, चक्रासन ऑफ मोर देन 18 minutes. एब्सोल्युटली ट्रू. फर्स्ट योगा डे वाज कंसिडर्ड इन द ईयर 2015. एब्सोल्युटली सोनू. 30% of more energy than the normal days of the year. Absolutely true, सोनू. वेरी नाइस. बिल्कुल उसे समर सॉलिटाइज पीक कहते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ एग्जैक्टली द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन व्हेन इट इज रेफर्ड टू स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ था? दैट पाली में योग यूनिवर्सिटी बन रही है. ये इंपॉर्टेंट है, राइट? अब यहां पे मैंने रेफरेंस पूछा है आपसे. इज देयर एनी रेफरेंस एसोसिएटेड विद योगा दैट्स इंपॉर्टेंट? So we can refer to the movement of sun being a prominent feature of this particular day, right?
सन का जो आपका अर्थ और सन का रिलेशनशिप है, अर्थ का मूवमेंट एंड सन शेप, sun's light, sun's energy, which is exactly 30% more delivered on this particular day, in which you can gain strength from the sunlight, in which you can get the peace from the sunlight, in which you can meditate peacefully. All that reference is given from the sunlight. तो ठीक है, 30% more energy वाला reference आप यहाँ पे ले लीजिए. Right? Is there any other question which can be asked? Yes, the shape of this university. The shape of this university, which is an Om-shaped university. क्या shape है? Om-shaped university है. Is there any question that can be associated with the yoga also? Tropic of Cancer का reference दे सकते हो, हाँ दे सकते हो, but जरूरी नहीं है. Northern hemisphere है, understood है, equator के ऊपर वाला portion है. ठीक है? Yes. Yes, yes, exactly. This was the Guinness Book of World Records, guys. ये आपने हाँ बिल्कुल सही याद दिला दिया, पेशल. ये जो है contribution, ये गिनीज बुक का कंट्रीब्यूशन था, इसलिए हमने लिखा था. ठीक है? यस. नहीं अटल बिहारी जी, अभी शाम को इवनिंग में नहीं लग रही है, जुलाई से लगेगी. ठीक है? 1 जुलाई से, इस मंथ नहीं लग पाएगी इवनिंग में क्लासेस. आई विल ट्राई फ्रॉम 1 जुलाई कि आपका इवनिंग में एक सेशन मैं कंडक्ट करूं. ठीक है? मॉर्निंग ये 10 वाला होगा, 11:30 वाला ऐप पर होगा, और उसके बाद में वी विल ट्राई फॉर 1 सेशन एट 4 to 5 in the evening. Right? Now that's not important, Surya, because नया योग आ गया है. Okay. Was there any provision associated with yoga in this particular economic review or survey? कोई ऐसा प्रोविजन था? हाँ हर्षिता, आपका पॉइंट ऊपर चला गया है और मेरे पास में स्क्रॉल वाला ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है. आप रीटाइप करेंगे प्लीज. जी अटल जी, शेयर कर दी क्या क्लास को? सारे टेलीग्राम चैनल्स पे, ग्रुप्स पे डाल दिया. आस्क द लर्नर्स टू जॉइन इन दैट सेशन. ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और जल्दी खत्म होने वाले में नहीं है ये. यस एग्जैक्टली सूर्या, योग में करे सहयोग, योग तो सहयोग. Right? That is also important. And exactly in the youth games, the yoga has been included. Exactly, Harshita. Very nice. In the youth games, there is an inclusion of yoga. Inclusion of yoga. Ministry involved will be now 2 ministries. Youth affairs as well as the Ayush. Ayush and Youth affairs. Absolutely true. What else? Good morning, Prerna. Good morning. Gazab. Chalo. Great. Let's move ahead now. India is celebrating Yoga Day at the Mysore. India is celebrating it in the physical mode after a gap of 2 years. He has been joined by 15,000 participants. तो मोदी जी ने जो ये आपका सेशन किया, ये 15,000 अलग participants के साथ किया. What else is there to know about this? International Yoga Day theme was Yoga for Humanity across the world with the great enthusiasm. Also, after the pandemic continued this year also, yoga is helping people to stay energetic and have strong immune system. So it's my request also that आप सबके लिए एक योग का इवेंट वीकली जरूर किया करो. एक सेशन वैसे तो कहते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट अगर आप डेली योग करते हैं तो आप वैसे भी फिट रहते हैं. इफ नॉट दैट गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हैव मेंटल पीस. फॉर यू टू हैव मेंटल पीस, माय रिक्वेस्ट टू कंडक्ट अ वीकली ऑल्टरनेट डेज, जैसे भी पॉसिबल हो, योग को अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट जरूर बनाएं. राइट राइट ओके. एसके चौहान, वेरी गुड मॉर्निंग. Moving ahead, guys, we have covered this in a very well mannered. I hope now. योग डे से एसोसिएटेड आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं. अच्छा, ये यूएनजीए वाली बात भी देख लेना, ठीक है. दैट ऑन दी 27th of September 2014 it was decided that now we are going to celebrate what? We are going to celebrate the yoga day. So now is this much clear, guys? ठीक है. सोब्रत जी, गुड मॉर्निंग. इतना क्लियर हुआ? Associating with the yoga day, we have discussed almost all the questions associating with the static and the dynamic portion. Same way we are going to do the next new set line.
This says PM releases Ram Bahadur Rai's book भारतीय संविधान अनकही कहानी, है ना, भारतीय संविधान अनकही कहानी. Again, looking to the current portion, who, when, what, where, how, and why. Right? Answer them. Who? Narendra Modi ji. When? When? The date is being mentioned. 20th of June probably. Date is not important in this. In this, date is not important. ठीक है? इसमें date important नहीं है. What is important? So write the name of a book. That is भारतीय संविधान अनकही कहानी. भारतीय संविधान अनकही कहानी लिख लो. भारतीय संविधान. Guys, now let me tell you why this book is important. अनकही कहानी. Right? Where? Place is also not important. Place is also not important in this. Right? So what we will do, place is also not important. How? Virtually or digitally? It was a virtual event, right? Virtual event. Narendra Modi launched it in an event. It was a program in which this book was launched, right? Exactly. How? Why was this launched? Because this has the unhidden, or we would say unrevealed facts of constitution with it, right? Right? Yes. Now Harshita has given a correct point that ma'am, why में एक चीज और हम ऐड करेंगे, that this was under the आजादी का अमृत महोत्सव. हम usually नहीं करते ये चीज, but why? He unrevealed the facts of the constitution under the celebrations of AKAM. Very important, right? Exactly. It's Ram Bahadur Rai's book. That's the भारतीय संविधान अनकही कहानी, which is very very important, right? योग के साथ करारी पेट्टू टोटल 5 पारंपरिक खेल भी जोड़े हैं. बिल्कुल जोड़े हैं. पारंपरिक आपके हम ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो आपके किसी ना किसी रीजनल एरिया से एसोसिएटेड हैं. They have also been included in this particular Ministry of Youth Affairs, right? In the youth games. Exactly. So is this much clear, guys? So this was the current perspective. Now let's have a look at the static perspective. What is the static GK that is associated? So first question that comes is the recent books associated with this one person, Ram Bahadur Rai. Has he achieved any of the Padma Awards or the Indian prestigious awards or any other, like I would say we have this awards, Pulitzer Prize or anything, any prize that is associated with him? It's Vijay Azadi Ka Amrit Mahotsav. AKAM stands for Azadi Ka Amrit Mahotsav, right? Okay. Moving ahead, guys, recent books is a very very important thing which we need to keep in mind if there is any book associated with him. Along with that, just have a look if we have any constitution associated act that was seen in news. Is also very important, right? Yes, हर्षिता with reference to मैं बता रही हूँ कि आपके static में भी current का perspective आएगा, ठीक है? Right? Is this much clear? Any other doubt, any other research that you want to continue with this particular topic? Atal Bihari ji, Samyak ji,
Prime Minister Narendra Modi released Ram Bahadur Rai's book Bharatiya Samvidhan Ankahi Kahani, and he noted that Shri Ram Bahadur Rai's lifelong quest for searching for new ideas and desire to bring something new before the society was very, very essential, right? He expressed the hope that the book that released today will present the constitution in a comprehensive manner. कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में गाइज एक चीज याद रखेंगे, जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव चीजों की बात करते हैं, देन इट इज अ कॉम्प्रिहेंस, मतलब पूरा इंक्लूसिव होता है उसमें, राइट? पूरा इंक्लूसिव आपके सामने आता है, राइट? मूविंग अहेड, नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द बुक बाय श्री राय will be in the tradition of New India's efforts to remember the forgotten thoughts. This is under the युवा, राइट? युवा याद है गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट्स युवा स्कीम और युवा इनिशिएटिव, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल authors, right? Exactly. To promote the young authors to write something or the other about what? About the Indian freedom struggle or the Indian national movement or anything associated with the India's independence, right? Anything, if you write about the Indian freedom struggle or about the Indian independence, then that will be credited, right? चलो, moving ahead, आगे बढ़ते हैं. Next is New Delhi to host the National Summit on Cyber Security and National Security. Coming to the current perspective again. Yes. Now what is important? Promoting reading, writing and books. मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी भी अभी, लेकिन अटल जी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, राइट? यस, टू राइट अबाउट द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल. भरत, आप वीडियो को वापस से थोड़ा आगे करो, आप फिर पीछे चल रहे हो, चलो. तो यहाँ पे रेफरेंसेस हैं व्हेन. सो वी हैव सीन नॉट द डेट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर बिकॉज कोई इंटरनेशनल डे नहीं था उस दिन जिस दिन ये एक्शन लिया गया. हु, तो वी कैन रेफर टू द मिनिस्टर्स, बट अ मिनिस्टर इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट राइट ओवर हियर, राइट? Then what is important, ma'am? This seminar is important as it will be creating awareness amongst the people associated with the cyber crimes that are raising nowadays. Place is Delhi, and also this was under again the AKAM, which will finally stop the crimes against anything. किसी के भी against जो crimes हो रहे हैं उनको target करते हुए ये आपका देखा जाएगा. अच्छा, एक चीज सिंपल सी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, that associated with this what was seen in news also associating with the cyber security, और क्या न्यूज में देखा गया था? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करिए. हाँ जी, साइबर अपराध से आजादी, बिल्कुल सही है. बताओ. Was there any application that was associated with the cybersecurity? Okay, but that's not the question, Surya. That's not the point that we are going to take up now. You know current affairs? Then answer the questions associated with the current affairs. Bhairav Singh ji, a very good morning. Exactly, Pegasus and Hermit. Absolutely true, Sonu. Absolutely true.
First thing we are going to understand the cyber security in this particular perspective. That ma'am, cyber security was a major concern. So on that, seminar was organized. Where? New Delhi. Where? New Delhi. Why? To create awareness. How? By organizing a seminar. But one thing, guys, that we need to remember is what? In this news headline. That अगर मेंस के perspective से question आता है, if there is a question on मेंस perspective, brief about cyber security and government's role in creating awareness among the people. क्या हो गया ये? Brief about what cyber security is and the government's role in creating awareness among the people. So now how would you write this answer down? बताइए. प्रेरणा कह रहे हैं साइबर स्वच्छता केंद्र. हाय शुभम, आई एम वेरी नाइस. अच्छा जी, थैंक यू सो मच शुभम. यस, पेगासस एंड हर्मिट इज द करेक्ट रेफरेंस. और ये भरत का भी बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस था. लास्ट टाइम मेरे को याद है क्लास में भरत ने ही ये रेफरेंस दिया था शायद. बताइए. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ इट इज कंसर्न्ड विद द मेंस पर्सपेक्टिव. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. How would you mention something with the mains? Yes. Nobody knows anything about the mains examination? Ma'am, WTO का टॉपिक ले लो प्लीज. ठीक है, लेंगे. Yes, guys, mention the question perfectly in the comment section. Yes. Reference है that about the cyber security, what will be your viewpoints? Cyber security क्या होता है? And then you along with that, अब जो मैं क्या बोल रही हूं आपको, ये क्या हो रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर? शुभम, स्टॉप दिस, ओके? जो भी बात है क्लास खत्म होने के बाद में, इन द मिडल ऑफ द क्लास ये कोई भी बकवास नहीं चलेगी क्लास के अंदर. आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी नाउअडेज इज अ प्रोमिनेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन. प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड नो मोर न्यूसेंस इन द कमेंट्स. यस, सो वी आर कंसर्न्ड विद द साइबर सिक्योरिटी and the government's role in creating awareness. So if some question like this comes in the examination, if the question framing is like this, or if you are asked to just brief anything about the government's role, then what you are going to do? बताइए. Exactly, Surya we can write this point down. Surya का point सही है that ma'am, डेटा और खुद की privacy को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम साइबर सिक्योरिटी को जनरेट करें. साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ज्यादा नहीं पता करो. साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसमें इश्यूज क्या क्या नोट कर सकते हो आप कि साइबर सिक्योरिटी से एसोसिएटेड इश्यूज क्या होते हैं. बैंक अकाउंट डिटेल्स वाला पॉइंट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है. एज नाउ यू आर यूजिंग द डिजिटल पेमेंट, साइबर सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. व्हाट वी डू, आपका वो टेक्स्ट आता है ओटीपी वाला, अगर वो ओटीपी किसी को पता चल गया, बैंक का खाता 1 मिनट में खाली हो जाएगा. वो एडवर्टीजमेंट भी दिखा रही है गवर्नमेंट अवेयरनेस के लिए. तो एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, दैट थ्रू द एडवर्टीजमेंट द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. क्यों? बिकॉज आई बिलीव कि बच्चा देख कर ज्यादा अच्छे से सीख पाता है rather than the books. एंड ट्रस्ट मी और नॉट, अगर आपको देख कर समझ आता है, ये सबकी बेसिक मेंटालिटी है. आज हम भी जब पढ़ते थे बहुत ज्यादा सिर्फ देख कर ही पिक्चर एक बार में याद हो जाती है, क्योंकि उसको हमने क्या कर रखा, विजुअलाइज कर दिया. लेटर्स को हम क्या कर देते, क्लस्टर कर देते, हमें नहीं समझ आता व्हाट्स देयर रिटन इन द बुक्स, राइट? यस, ये कंसर्न हो गया पर्सनल लेवल पे.
पर्सनल लेवल पर ये कंसर्न हो गया साइबर सिक्योरिटी का कि बैंक से पैसे चल जाते हैं, प्राइवेसी लूज हो जाती है, डेटा खुद की प्राइवेसी कुछ नहीं रही है, ठीक है। फिर हर्षिता का पॉइंट है मैम साइबर सिक्योरिटी किसी भी फील्ड में हो सकती है ना, लाइक बैंकिंग एक्सेट्रा भी। हाँ हर्षिता वो मैंने बता ही दिया। साइबर सिक्योरिटी लीगल रूल बनाए, ठीक है, ऑलरेडी है। गवर्नमेंट को भी कई लोग काफी हानि पहुंचाते हैं, अकाउंट्स हैक करके डॉक्यूमेंट्स को करप्ट कर सकते हैं हैकर्स। यस, वेरी नाइस पॉइंट सूर्या। साइबर सेल्स फॉर द रिड्रेसल्स ऑफ द साइबर क्राइम्स, यस दिस इज गवर्नमेंट्स रोल, ठीक है। पहले सूर्या की प्रॉब्लम लेते हैं, फिर भरत का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। सूर्या ने लिखा है दैट मैम एग्जैक्टली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जिसमें बहुत कॉन्फिडेंशियल न्यूज हेडलाइंस हैं, जिसमें बहुत कॉन्फिडेंशियल अपडेट्स हैं, that is also a major concern associated with the cyber security, that why we need to protect it. National security guys associated with the cyber security. आज हमारी सेना कहाँ तैनात है, उसके पास में कितने वेपन्स का काउंट है, आर्टिलरी हमारी कितनी स्ट्रांग है, all this is written in the government documents. And if someone gets an access to those documents, it's a threat to the national security. Our defense will be shattered. Our defense system would be like fumbling or shattered. So we cannot do that. We cannot compromise on that. So what the government has done, cyber cells have been made. Recruitment of the skilled hackers to counter hackers. Exactly. Now there have been recruitment of the hackers in these cyber cells departments and in the government departments. Why? To counter the extreme level hackers as they are hacking all these accounts and everything, right? शिव कुमार जी बिल्कुल छोड़ दिया है, अभी यहाँ पे हैं, आप पढ़िएगा इससे, ठीक है। चल, साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। एब्सोल्युटली ट्रू सोनू, एब्सोल्युटली ट्रू। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते टाइम आप लोग ध्यान दें, बिल्कुल। हनी ट्रैप वॉज ऑल्सो सीन इन न्यूज, हमारे आर्मी मेंस को ट्रैक कर लेते हैं लालच देकर, बिल्कुल। हनी ट्रैप वाज सीन इन न्यूज एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज, राइट। शिव जी का आंसर है मैम हमने छोड़ दिया क्या? जी बिल्कुल, ठीक है। गवर्नमेंट ने यूपीआई को यूज करने की भी गाइडलाइंस बनाई हैं, लाइक आपको पैसे लेने के लिए क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना है। आजकल सबसे ज्यादा फ्रॉड इसी से हो रहे हैं, एग्जैक्टली। एंड अ रीसेंट एग्जांपल वाज लाइक सीन इन न्यूज, और लाइक समवन नियरबाय टू मी told me that he was giving the payment to the Zomato person, right? It was a delivery, or I guess, I don't know, I'm not sure about something. It was something associated with a delivery, right? Someone delivered something which I ordered. For example, like I ordered something and it was my delivery time, right? I delivered the product was delivered to me. I paid it in cash. It was something of 150 rupees. I gave 500 rupees back. And what he asked me to do, that please give me your QR code. I'll return the 350 rupee to you through your QR code in your bank account. So I showed him my QR code. At that moment, there was a message associated with the transaction of 350 rupees. But it was not associated with a debit or credit. It was just a message, just a text message. So that was a fraud, right? This was, I guess, somewhere I read this in the newspaper, or someone told me this story, or maybe I watched it on some reels or something. That was important. Be aware of the fraudsters, right? बारकोड पर अपना कोड लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। एक देश एक क्यूआर, इसकी लेडीज हनी ट्रैप करती, हाँ बिल्कुल, ये हनी ट्रैप वाला लेडीज से एसोसिएटेड था बेसिकली, एंड दिस वाज शोन इन वन ऑफ द मूवीज टू, दिस शोन इन वन ऑफ द सीरीज आल्सो, राइट। गुड मॉर्निंग कुलदीप, गुड मॉर्निंग। यस यस एग्जैक्टली प्रेरणा। सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड योर प्रिवेसी। सो अब आप इसको फ्रेम कर सकते हैं, कैसे करेंगे? पहले आप साइबर सिक्योरिटी, व्हाई इज दिस साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, राइट। व्हाट विल यू बी डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एग्जैक्टली क्या है, तो हमने समझ लिया है, खाली हमको उसको फ्रेम करना है। यू कैन रेफर टू एनी बुकिश लैंग्वेज विच यू लाइक एंड यू कैन राइट दैट point down, right? Yes. Another thing that is associated is why do we need cyber security? तो अब इसमें why do we need में क्या कर सकते हो, आपके सारे इश्यूज लिख सकते हो, राइट। एंड आगे चल के जब आपने ये सारे इश्यूज लिख दिए हैं तो इन इश्यूज का रेजोल्यूशन गवर्नमेंट कैसे कर रही है वो लिख सकते हो।
तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन का हमने देखे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रही है, साइबर सेल्स के बारे में बता रही है, गाइडलाइंस इशू कर रही है, पेमेंट्स और प्रोसीजर्स और इन सबसे एसोसिएटेड द गवर्नमेंट इज डूइंग कांस्टेंट एफर्ट्स, एप्लीकेशंस लॉन्च कर रही है, इंटरनेशनली जो एक्शंस लिए जा चुके हैं उनको भी एक्सेप्ट कर रही है और इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये सब एक कंसर्न हो जाएगा जो हम किस में लिख सकते हैं, आपके वाई में लिख सकते हैं, राइट? यस, एग्जैक्टली, राइट? What is cyber security? Why it's important? Associated with the government rules. Exactly, Prerna. That's the question. But question won't be asked in a simple language. देखो, just keep in mind, guys. जो भी question थोड़ा सा टेढ़ी भाषा में होता है ना एग्जाम में, जो भी question हल्का सा टेढ़ी भाषा में होता है, उसका आंसर बहुत सीधा साधा होता है. ये हमेशा ध्यान रखना. And the question that has a straight language associated with it will be having a tricky answer. अगर आपसे सिंपली पूछता है why is cyber security important, ट्रिकी आंसर है. टेढ़ा पूछ लिया तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट? इजी हो जाएगा. आजकल रेड लाइट्स पर भी मिरर साफ करने वाले बच्चे हाथ में स्मार्ट वॉच पहनकर रखते हैं और मिरर साफ करते टाइम फास्ट ट्रैक पर स्मार्ट वॉच से स्कैन कर लेते हैं. मेरे साथ हो चुका सेम. आज स्कैम्स का कोई भरोसा नहीं है भैया, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है. तो जितना है आप सतर्क रहें, है ना? बी अवेयर अबाउट वॉट एवर ट्रांजेक्शंस यू आर डूइंग. यस, लेट्स मूव अहेड. साइबर सिक्योरिटी, साइबर अपराध से आजादी अंडर दी आजादी का अमृत महोत्सव. तो हम क्या चाह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि अब सेफ्टी सिक्योरिटी इतनी बढ़ जाए कि इसी साल में हमें साइबर क्राइम से भी आजादी मिल जाए, राइट? बेसिकली जो जो लोग प्रेजेंट थे उन सबकी डिटेल्स दे रखी है, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. बिल्कुल जी. हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम्स द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2022. एयर एसोसिएटेड क्या क्या न्यूज हेडलाइंस होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो हमें एयर एसोसिएट बताओ. देखो, सबसे पहली चीज स्टैटिक जीके, एसोसिएटेड विद स्टैटिक जीके. वी नीड टू कीप इन माइंड दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट with reference to the air pressure that is being applied for the like flights and everything. सबसे पहली चीज उससे ध्यान रखनी है, right? Just give it a read, guys. 1 second, 1 minute water break. Exactly. This we have discussed, Atal Bihari ji, in the last class, that how is right to privacy an important concern of our cyber security, right? Exactly. Consecutively, for the second year, this Hamad International Airport is seen on the best airport list for the years, right? Now, what is important? Who, when, what, where, how, when. Right? Who? We don't know. Not important. When? No, don't know. Don't know. You don't know. We know it. यहाँ देखो. It's written that the announcement took place at the Skytrax 2022 World Airports Award. क्या दे रखा है? Skytrax 2022 World Airport Awards. Right? Exactly. And this is important that we note this point down. That Skytrax 2022 was the concerning aspect with respect to what? With respect to the when, guys. ये Skytrax में when आएगा, ठीक है? Skytrax 2022 awards की बात हम यहाँ कर रहे हैं. What? Best international airport. Is Hamad. Right? Where? So this took place in the Paris,
फ्रांस, पैसेंजर्स टर्मिनल एक्सपो पेरिस, फ्रांस। क्यों कर दिया गया? तो गाइस देयर वर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन विच दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट वाज जज्ड। द मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम उन फैसिलिटीज को होने के बाद भी उन्हें एक्सेस कर पा रहे हैं? Accessibility. So there have been many parameters on which this was concerned. Hygiene was one of the factor. फिर ease, लोगों के लिए ease कितना है? अभी आप imagine करो कोई एयरपोर्ट है, और बहुत नॉर्मल सी बात है एयरपोर्ट के लिए 1-2 किलोमीटर का होना, 2-3 किलोमीटर का एयरपोर्ट होना आपके बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर कोई 5 किलोमीटर का एयरपोर्ट है, एंड इफ देयर इज नो सर्विसेज एसोसिएटेड विद द इंटर एयरपोर्ट ट्रैवलिंग, इंट्रा एयरपोर्ट ट्रैवलिंग, उसी के अंदर ट्रैवल करने के लिए कोई फैसिलिटी हमारे पास में नहीं है, देन दैट्स वेरी वेरी बैड थिंग। दैट्स वेरी वेरी बैड थिंग। यस, सो दैट्स अ वेरी बैड पॉइंट, राइट। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? आपके पैरामीटर्स बता सकते हैं कि उन पैरामीटर्स में क्या कर रहा था? एक्सेल कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, ये हो गया करंट एसोसिएटेड, है ना, ये हो गया करंट एसोसिएटेड। नाउ वन थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट, एनी अदर एयरपोर्ट सीन इन न्यूज? सो यस मैम, कंसर्न्ड विद द renewable energy, as renewable energy is one foremost point of India nowadays. Why? Because of the energy independent India's target. So now we can see that the Delhi airport, very nice spatial Delhi airport, पूरी तरह से सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट है। Absolutely. Then we can see the Kempegowda airport is Bangalore's India's best airport, right? Exactly. So it's very important. India से काशीपुर यूपी एयरपोर्ट भी न्यूज में था, खुशीनगर था। खुशीनगर एयरपोर्ट was seen in news to be UP's third airport, I guess, international airport, right? Exactly. Indira Gandhi International Airport, New Delhi, is associated with the airports having access and dependency on the renewable energy, and in specific to the renewable energy, it being the solar energy, right? Is this clear? Information Technology Act के clauses भरत ने mention करे हैं associating with the cyber security. So just have a look at it because that is also very important, and thank you Bharat for that point, right? हाँ जी, खुशीनगर था वो point, है ना? चलो ठीक है, Is this much clear guys? समझ में आ रहा है? इंडिया का एयरपोर्ट देख लो, कैंपेगौड़ा था, ठीक है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट was named as the finest regional airport in India and South Asia. Now customers voted for the airport with the greatest customer service every year in a global study, and at the Bangalore airport received this particular honor. Singapore Changi airport, very nice, very big airport. Changi airport बहुत सुंदर और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब you won't believe, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो कुछ भी नहीं है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट के आगे। इतना बड़ा है चांगी एयरपोर्ट, इतना बड़ा है, राइट। This is the world's best airport staff service and world's best airport dining. So for the dining services, it has various spaces concerned. So you can refer to all those points associated with it, right? ठीक है, 66A है हर्षिता. Yes. So now we need to keep in mind, guys, and we need to do a lot of development in this airports and the aircraft sector and everything. Right? Now with the airports only, one thing that's important is associated with what? One thing that is important, इतना नहीं आएगा सूर्या, इतना डिटेल में नहीं आएगा. Aircraft and pilots seen in news. Right? Aircrafts and pilots seen in news. Yes. Is this clear?
एयरक्राफ्ट पे चलेंगे अब, चलो चलो. ओके, लेट्स गो एंड मूव टू द एयरक्राफ्ट्स. यस, anyone who has noted the aircrafts or the pilots that have been seen in news? Can you name some? Yes guys, important है यार, बहुत important segment डिस्कस कर रहे हो अभी. Trust me or not guys, what we are discussing right now is very important. Out of all the classes that I take, out of all the classes that we have attended together, this is very important. Shivangi for Rafael, very nice point Harshita, very nice. Yes, Monica Khanna saved the SpiceJet aircraft through the emergency landing. Absolutely true. When the backfire catch the fire. That's very nice. All India Air India offers to rehire pilots post retirement for 5 years. इंडिया की फर्स्ट फाइटर प्लेन उड़ाने वाली कौन है? फर्स्ट फाइटर प्लेन उड़ाने वाली है कौन है हर्षिता? सही बता रहे हैं ये? आयशा अजीज ने सबसे कम एज में प्लेन फायर करने वाली वुमेन बनी. यस एब्सोल्युटली, आयशा अजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. शिवांगी सिंह इज वेरी इंपॉर्टेंट. अवनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोनिका खन्ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर वुमेन कंट्रीब्यूशन. एनी मेल कंट्रीब्यूशन टू? Any male contribution too? Yes, अवनी चतुर्वेदी. yes, बिल्कुल मुकुंद, उन्हीं की बात कर रहे थे हम. अवनी जी बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes, so these are some of the points and I'm glad that you are very clear about it. Very glad कि आपको ये सारे points आते हैं, है ना? तो कुछ नहीं करना है, सिस्टमैटिक तरीके से इनको याद कर लेना. That's important and that's enough. Aircrafts driven and the pilots which were seen in news. That's important. Okay? चलो ठीक है, आ ही गए हैं. आयशा अजीज जी जम्मू एंड कश्मीर से हैं. ठीक है, अब आ ही गए हैं. एक छोटा सा रेगुलर क्वेश्चन भी पूछते थे, राइट? सो विच एयरलाइंस वेरी नाइस. मुकुंद कह रहे हैं कि मैम मेल कंट्रीब्यूशन तो है ना, वो धमाल मूवी में देखने को मिला है, एयरपोर्ट का और फ्लाइट्स का. चलो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वो भी याद रखना, मेल कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो रेड बटन था, हाँ दिख रहा है, हाँ नहीं दबाना था. सो कीप दैट इन माइंड. दैट वाज अ वेरी फनी सीन. यस, मेरे कोई याद नहीं आ रहे हैं. वुमेन एम्पावरमेंट मैम. सूर्या, लेट मी आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन इज which airline is associated with the transportation of perishable goods? Right? With the transportation of, Harshita, क्या बात है? With the transportation of perishable goods. So Go Airlines is considered. Go Airlines will be associating with the transportation of the perishable goods from Jammu and Kashmir to the rest of the India. Right? Yes. Yes, that's important. Yeah, Go Airline. Very good, guys. Good going. So this is a list of top 20 airports in the 2022. Not exactly important, but just have a look at it. ठीक है, एक काम करना. हाउ मेनी ऑफ यू आर एसोसिएटेड विद मूविंग लाइक हैविंग सम फॉरेन ट्रिप्स इन देयर माइंड? किसके दिमाग में है कि भारत दर्शन के बाद में हमें ये सब चीजें देखनी है ना? तो एक काम करना, ये लिस्ट बना लो. बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं एंड विद द बेस्ट डेस्टिनेशंस, सो यू कैन हैव अ लुक एट ऑल दोस डेस्टिनेशंस ऑन दीस पोर्ट्स, राइट? अ वेरी गुड मॉर्निंग देवेंद्र, लॉन्ग टाइम. देवेंद्र जी, कैसी चल रही है तैयारी एग्जाम्स की इंडिया से? Zurich Airport. Yes, there is Zurich Airport. So you can have a visit to the Switzerland. सूर्या का फेवरेट क्वेश्चन है. एक बार RAS में आ चुका ना. So now Surya is very considered with this question now. Bhagirath Sharma, very good morning. No plans? Then plan it. Once you'll clear your IAS examination, UPSC civils examinations, the government will be providing you with this Bharat Darshan, right? But you won't be offered with the foreign trips and everything.
You can just have a list of these airports and create them. Arey wow, very nice, Devendra ji, very nice, very nice. So we are talking about this particular airports list, and many congratulations, Devendra. Devendra is a very old learner of mine. So his prelims examinations has been cleared up. Very congratulations, Devendra. And keep learning. Yes, सूर्या, बिल्कुल सूर्या का फेवरेट एटीएम है, इससे जिक्र करते हैं. हाँ जी, मिलेगा, बट पता तो होना चाहिए ना. अब गवर्नमेंट तो पूछेगी कहाँ जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? कहीं भी भेज दो. पता होना चाहिए कि मैम मैं पहले हमद जाऊंगा, फिर टोक्यो जाऊंगा, फिर सिंगापुर जाऊंगा, नरिता जाऊंगा, इंचियन जाऊंगा, पेरिस जाऊंगा, म्यूनिक जाऊंगा, इंस्तानबुल जाऊंगा, कंसाई जाऊंगा, हेलसिंकी जाऊंगा, सेंट्रल जापान जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, एम्स्टरडम जाऊंगा, मैड्रिड जाऊंगा, कोपेनहेगन, ग्वांगझाओ, वियना एंड हांगकांग. We can just make a list of all those things, right? Yeah. Kajal, a very good morning. A very good morning. Venice देखना है मैम. World's best tourist जगह. Venice देखना है. क्या बात है? Very nice. Okay, Northern Lights देखना है. Very nice. Very nice. That's really nice if you have those bucket list in your mind, because you should have dreams. अंदर से एक zeal होती है उन्हें fulfill करने की, right? Yes. First we get rich, then rich first, then world tour. Okay, patient. Yes. Yes, लो more creations. क्या कह रहे हैं आप? चलो, तो इन जगहों का नाम ध्यान रखिएगा ना. हाँ जी, बोल दिया ना. अब नाम तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था प्रोनाउंसिएशन वाला. वो बोलोगे वर्ल्ड टूर करने के लिए आईएएस बने क्या? नहीं नहीं, देखो, पर्सनल लाइफ अलग है, दैट्स डिफरेंट थिंग, एंड द प्रोफेशनल लाइफ इज डिफरेंट थिंग. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोफेशनलिज्म टू, शुड वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट योर एफर्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब. गाइज, वो लिटरली वो एक कौशल सर वाली चीज बहुत अच्छी थी, जो एक नॉर्मल इंसान और एक सिविल सर्वेंट के अंदर डिफरेंस बताती है. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक चीज हमेशा याद रखना, सेवा के भाव से हमेशा जॉब ज्वाइन करना. देन यू विल बी एबल टू वर्क बेटर फॉर द सोसाइटी एंड एवरीवन. और जब सबके लिए अच्छा करोगे ना, तो खुद के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा कर पाओ. मतलब वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी खुद के लिए, उसी से सारी पीस मिल जाएगी, है ना. यस, आरएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट जयपुर में सम्यक ज्वाइन नहीं कर सकती अभी, बिकॉज मैं हाउसवाइफ हूँ. प्लीज गिव मी सम गाइडलाइंस. Kajal, can you wait for half an hour, or please come back after half an hour if you want, because in the middle of the something I cannot discuss that strategy session or something. But okay, if you want, we will be conducting a strategy session very soon, right? Associating with all your problems, we will be conducting a live session very soon, probably on 1st of July. I want to start a class with that. Yeah. हाँ जी, ठीक है. I will be helping you, Shubham. Yes, serve India. Yes. कर्म, बिल्कुल कर्म, very very important. Okay, so the next news headline is associated with the Payments Vision 2025, which aims for a threefold increase in digital payments. Guys, pay attention. ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, that's what is important. अब आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई बैंक से एसोसिएटेड चीजों पे और एक्शंस पे ज्यादा ध्यान ना देकर आपके किस चीज पर फोकस कर रहा है? इट इज मोर फोकस्ड ऑन द डिजिटल ट्रांजैक्शंस, associating people with the financial inclusion and the digital contribution that they can consider and give. So what we can do is we can just conduct this particularly peacefully, right? This is a threefold session, guys. Important क्यों है? एक चीज याद रखो, like when we are doing something associating with could be an iPhone too. Now what the RBI is doing, RBI is paying attention to the digital payments, targeting people to involve in the digital payments. Now why is they focusing on the digital payments? Simple चीज है guys, अगर हर एक transaction बैंक से होगा तो गवर्नमेंट के पास में white money records होंगे, and when there will be no black money records, then we will be corruption free, which we need to improvise. करप्शन इंडेक्सेस के अंदर इंडिया कोई बहुत टॉप पे नहीं आ रहा है. इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, राइट?
So what we can do is to improve our target count in the corruption indexes and to be practically corruption free, to be on the grounds level corruption free, what we can do is we can just clear all these concepts of RBI paying attention to the digital payments, right? हम न्यू स्टूडेंट है मैम, हमको भी IAS PCS बनना है, मेरा सपना है मैम, प्लीज। ठीक है, 3x, यस 3x एब्सोल्युटली जी। शुभम थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, 2-3 दिन में कोशिश करके एक सेशन लेकर आएंगे जब काजल जी का, शुभम का, हर्षिता का, YT कैप्टन अक्ष का, सबके डाउट्स हम लेंगे, ठीक है। पेमेंट विजन 2025 का लक्ष्य डिजिटल पेमेंट में 3 गुना बढ़ोतरी करना है, बिल्कुल 3x, दैट्स व्हाट 3-fold इंक्रीज मीन्स, राइट? या, इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द स्टैटिक क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद द RBI। करंट और स्टैटिक दोनों देख लें साथ में, ठीक है। फर्स्ट थिंग, RBI के कोई रिसेंट जितने भी टारगेट्स हैं वो नोट डाउन कर लेना। RBI की इंडेक्सेस, जो भी इंडेक्स RBI देता है वो नोट डाउन कर लो, एंड कीपिंग दोज इंडेक्सेस इन माइंड, द रेशियोज आल्सो। रेशियोज कौन से बोल रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक रेट्स एसोसिएटेड ओवर हियर, द बैंक रेट्स, द क्रेडिट रेट्स, एंड द CRR, the SLR, all what have been decided, and if there is an increase in the quarter or a decrease in the quarter, all that needs to be taken care of. RBI का कोई नया एक्शन प्लान, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएटिंग विद एनीथिंग। RBI का किसी बैंक को कोई लोन ग्रांट, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट दीज पॉइंट्स डाउन, राइट दीज पॉइंट्स डाउन। वो मूवी देखिए कैप्टन अक्ष, कैप्टन अक्ष कह रहे हैं कि दैट्स इट्स इम्पॉसिबल फॉर टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ नो करप्शन कंट्री और अ करप्शन फ्री कंट्री। इट इज पॉसिबल। ग्राउंड रूट लेवल पे बस एक चीज है कि जब हम खुद, आज एक सिंपल सी चीज बताना, RBI के चेयरमैन बोर्ड का आपका डिस्कशन हुआ था अभी 4 लोगों का, बिल्कुल करेक्ट हर्षिता। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का रेफरेंसेस वी कैन रेफर टू शुभम, एब्सोल्युटली ट्रू। सो ऑल वी कैन नोट ओवर हियर इज दैट एसोसिएटिंग विद द RBIs, द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस वुड बी रेफरिंग टू द रेशियोज एंड द रेट्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड बाय द गवर्नमेंट, व्हिच वी कैन रेफर टू द CRR, the SLR, the repo rate, the reverse repo rate, the bank rate, everything. Then the indexes, that is the DPI and the FIIs, and any other index that in which the RBI is contributing. The targets, like this was the target associating with the payments vision 2025. So we need to keep in mind if there is any other target associated with this too, right? The financial inclusion efforts that the RBI is doing, that too, and any other appointment in the RBI chairman committee, the board or etc. will also be taken care of, right? Yes. RBI chairmans और इनके ऊपर तो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, राइट? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द इन्फ्लेशन इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एग्जैक्टली सोनू। एंड ऑल्सो वन थिंग गाइस, इमेजिन करो एक जो आपकी टैक्स की चोरी होती है, राइट, दैट विल बी रिड्यूस्ड इफ ईच एंड एवरी स्टेप वुड बी कंसिडर्ड इन अ व्हाइट मनी कॉन्सेप्ट। अगर हर एक ट्रांजैक्शन आपका डिजिटल होने लग जाएगा तो जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो भी वो खुद ही ले लेगी, आपसे नहीं मांगेगी, राइट? यस मुकुंद, वी कैन मार्क दैट पॉइंट आउट। जितेंद्र कुमार जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आई होप द फैक्चुअल क्वेश्चंस आर क्लियर, राइट, वेरी क्लियर। फिर इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको एक बार पहले भी बोला होगा शायद, आपकी एक बुक है ईदर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स और ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, 11th या 12th की एक बुक है, आई गेस माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है, जिसमें बैंकिंग करके एक चैप्टर आता है। And in that particular banking chapter, there have been a point associated with the central bank. Understand the features and the importance of central bank and the drawbacks. So in features, you will be discussing the lenders of last resort, custodians card, everything. Understand those points. Whenever there will be a mains answer associated with the RBI, you need to write those points down to achieve great marks. वो points आप जरूर याद कर लीजिएगा, right? ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आए हैं, बिल्कुल पेशेंट, इसीलिए बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। सो दिस पेमेंट विजन 2025 इज वेरी क्लियर टू यू। आई होप नाउ देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। तो ये सिर्फ किस लिए है कि आपके जितने भी आपके पेमेंट्स हैं वो डिजिटली एक्सटेंड हो सके,
right? 11th economics. Shubham, I guess what I believe is there have been a slight change in the economics subject. Now we have a micro and macroeconomics. Now we have the Indian economy and microeconomics in one class, and macroeconomics and statistics in the 12th class. I am not sure about. I guess I read that in 11th standard. When I was in 11th standard, we used to have this microeconomics and we used to have this Indian economy and statistics together, and macroeconomics and microeconomics together. But now the syllabus have been updated. They have changed. They have reversed the books. Right? Sadhna, very good morning. Just have a look at it. There is a chapter either in the micro or the macroeconomics. I guess it is in the microeconomics only, not in the macroeconomics. Because macroeconomics, it has produces equilibrium and so and so associated things. Right? In the microeconomics, there is a topic associated with the banking sector. It's a theory topic. You can just give it a read and then come back, and if there is any doubt, you can refer to me. Right? Yeah. Okay. So now let's move ahead, guys. Yes, Sadhna. हाँ जी, it's been a long time, साधना. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देख सकते हैं कि कितना आपके डिजिटल पेमेंट्स में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, राइट? Exactly. Okay, moving ahead, the Fujian is the China's third most advanced domestically built aircraft carrier. It's important, and when we were discussing this aircraft and airlines associated thing, Bharat referred to this point, but I guess I skipped that. Yes, that's also an important point. Ragnar Frisk is the person who divides the economics in the micro and macro. Yes, exactly. Okay. Listen, guys, if it's not possible for you to have this discussion on the banking sector on your own, you cannot have this topic completed on your own, let me know. I will help you out in discovering those topics, right? Yes, politicians money transactions को करना चाहिए online. रक्षा मंत्रालय सबसे ज़्यादा corruption होता है. Captain Aksh, we cannot refer to that on without evidences, right? What either we can do is we can refer to it as a whole, targeting the individuals and the groups together. दोनों को साथ में रखकर अगर हम बात करते हैं, then that will be a better option, irrespective of what we consider to be an problem with the departments. ठीक है, तो इस तरह से मोल्ड करके लिखना है. Whenever you are going to write a mains answer, be a diplomat, please. Diplomacy के साथ आंसर लिखना सीखना है. Indigenously built by China, which means that China has created it on its own. Indigenously मतलब खुद का ही बनाया हुआ है. No other foreign help was assisted and required. Right? Monetary policies के लिए RBI responsible है, आपके financial inclusion के लिए responsible है, digital payments के लिए responsible है, आपके banking regulations के लिए important है, banking acts के लिए important है, banking appointments के लिए important है, आपके bank से associated जितने transactions हैं उनकी safety और security के लिए important है, CRR, SLR और इन सब की ratio set करने के लिए important है. RBI is the central bank. It is the lender of last resorts to the banks also. It is the custodian also. Custodian, if we refer to the in banking sector only, he helps, the RBI helps the banking sector as well, right? Yes, homemade of China. Exactly. IAS PCS में कौन सी बुक्स पढ़नी है मैम? चलो एक क्लास लगाएंगे जिसमें बताएंगे कि कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, आप किस एज ग्रुप में हैं और कितना आपको पढ़ना रिक्वायर्ड है. ठीक है, RAS एसोसिएटेड एक क्लास हम बता देंगे. ठीक है, कंडक्ट कर लेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स को हम टारगेट करेंगे. यस, सो नाउ गाइस, फुजियान इज क्लियर, राइट? सुपर कंप्यूटर भी अभी न्यूज में रहे थे, उनके ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान देंगे. ठीक है, इट इज द नेम, फुजियान इज द नेम गिवन टू द चाइनाज ईस्टर्न मोस्ट कोस्टलाइन प्रोविंस. अच्छा, अब चाइना है तो स्टैटिक भी आएगा. तो देखो, चाइना का साउथ चाइना सी, क्या क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं. चाइना के साउथ चाइना सी में क्या क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं. What are the initiatives of China in countering and commanding over the world? इसमें आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव को टारगेट कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देन अगेन वन थिंग,
What all are the organizations, international organizations, in which India and China are togetherly involved, like BRICS, right? Also, we can refer to one thing, guys, that's important. In this whole, जब भी ऐसे China associated कोई चीज news में आए, then have a look at the India and China relationship, in which you are going to discover the historical backgrounds, the contributions that they are doing nowadays, right? Param Siddhi, बिल्कुल सही. Also, along with that, any other dispute with China? So basically, when we discuss the positives, the negatives, and the combined advantages, the basically the critical analysis of the India and China relationship, then that will be helping us out in understanding what China is of how China is important and how strategically China is important for us, right? Is this clear? BRI and everything? Yes, guys. Yes, very nice. BRICS, absolutely true. Chalo, very, very good. Australian military in South China Sea. Yes, China, Philippines, absolutely. जितने भी China associated issues हैं सब discuss करो. ठीक है? कोई doubt है comment section में यहाँ तक तो बताओ. कोई doubt है comment section में? Fugaku, Japan's supercomputer, taken up by recently overtaken. किसी ने इसको ओवरटेक कर दिया है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? यस, any concerning point that you are concerned of right now, of real importance? Yes, guys. Nobody associating with the supercomputer news? Just a second, Harshita. Exactly. Frontier of the USA has superseded the Fugaku of Japan. Absolutely true. Moving ahead. Whenever we talk about the China's first aircraft carrier, it was Liaoning, right? And Shandong was the second one. Now it is the third one, that is Fujian. So you have 3 aircrafts of carrier. One was of the Soviet help, right? The second, Shandong, was very, very important. It was China's indigenous. And then we have seen the Fujian, which was also China's indigenous. So now China aims to have roughly 5 aircraft carriers. 2 are in progress. Yes. Country is no point, ma'am. Why it's no point, Shubham? Frontier USA is very important. Fugaku Japan is very important. किसने किसको पीछे छोड़ा, very important. चलो, इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्लीज इन दिस कमेंट सेक्शन गाइस, इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इंडिया सुपर कंप्यूटर. यस, वैसे तो हम रेफरेंस ले सकते हैं किसका, पेशल का शायद ऊपर कमेंट आ चुका था, एंड आई इवन शाउट दैट कमेंट आउट. यस, इंडिया सुपर कंप्यूटर. परम प्रवेगा, परम अनंता, Pravega. Guys, now please note this down, that Param Siddhi is the fastest supercomputer of India. Param Siddhi. And the first was, the series is Param Padma was first. Right? Param Siddhi is the name given to the fastest supercomputer of India till date. Yeah? Aircraft carrier जो भी commission and decommission हुए वो भी important. देखो हर्षिता, with reference to the Indian perspective, yes, they are important. But with reference to the neighboring countries, they are not important. Right? Param is the India supercomputer. Absolutely true, Kajal Soni. And that's what we need to keep in mind. Capnash, very nice. Param Siddhi is the correct answer. Shubham Maurya, Param is the group. उसके अंदर कम से कम 10 supercomputers already launched हो चुके हैं. So next news headline, Gujarat PM inaugurates the renovated Sri Kalika Mata temple.
नाउ गाइस दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? किसी को इस बुक का रेफरेंस याद है? तो इरिटेटिंग है तो क्या करें, याद नहीं करें? बोल दें गवर्नमेंट को भैया मैम सर बहुत सारी अनुकृति है, हमें तो नहीं पढ़ना अनुकृति मैम से. यहाँ बहुत सारी करंट की क्लासेस होती है, हमें तो करंट नहीं पढ़ना. ऐसे थोड़ी होता है. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. जो पसंद आए वो कर लो, याद है ना. ऐसे एक दिन तो बोल दो कि मैम पलटिया करंट हो गया, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, छोड़ दो आप तो, है ना. समझ गए? हाँ दिख ही रहा है मेरे को. यस मैम आता हुआ. राम अनंत IIT गांधीनगर सुपर कंप्यूटर करवाया था आपने अभी अभी रिसेंटली, वो न्यूज में था सूर्या. बट दैट वाज नॉट एसोसिएटेड विद व्हाट? सुपर कंप्यूटर ही था. दैट वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फास्टेस्ट स्पीड. ओके नहीं पढ़ना है मुझसे, ठीक है शुभम जी कोई बात नहीं. या ऐसे कह रहे हो नहीं पढ़ना है आपसे. ये जहरीले सुल्तान ने ये मंदिर तोड़ दिया था एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज रिकंस्ट्रक्टेड दिस पर्टिकुलर टेम्पल. एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? व्हाई इज दिस टेम्पल इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट कंसर्निंग एस्पेक्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ द रीजन ऑफ गुजरात. पावगढ़ के अंदर ये लोकेटेड है, राइट. एंड देन वी कैन कंसिडर टू द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेम्पल, राइट. यस हमको आपसे पढ़ना है मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं. थैंक यू सो मच शुभम जी, थैंक यू सो मच. Yes. So we are referred to this particular written Pavgarh Hills in the Panchmahal district. This temple is located, and with reference to the temples, guys, one thing is very important, right? हाँ मुकुंद, ये भी philosophical बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है. पिटना है. चलो ठीक है. मूविंग अहेड गाइज, एक चीज समझना, जब टेम्पल्स की बात आती है, so any temple that is being seen in news is very important, right? सूर्य का कमेंट क्या है? पिटना है. ठीक है आ जाओ, पीट देती हूँ, आ जाओ. थप्पड़ या बेल्ट से पिटना है आपसे. क्या यार सूर्य, कुछ भी. whenever we talk about this something, अच्छा टाइप हो गया लेकिन मिस टाइप नहीं हुआ, करेक्ट टाइप हुआ है. पढ़ाई नहीं करोगे तो पिटाई ही होगी. चलो नेक्स्ट, टेम्पल्स. As this Kalika Mata temple was seen in news, we are going to have a look at this historical perspective. Why was this important in the history? And one thing guys, nearby temples associated with the time period of Kalika Mata temple, right? अब Kalika Mata temple की बात आई है तो एक चीज ध्यान रखना, the temple associated question can come in the examination. There are 99% chances of this, right? अब कैसे पढ़ोगे? तो एक दिन पूरा डेडिकेट कर दो टेम्पल्स को. अब इसमें क्या करना है? इंडिया का टेम्पल स्ट्रक्चर पढ़ना है. इंडिया के आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड सारा टेम्पल स्ट्रक्चर हमें देखना है, राइट. अब कैसे देखोगे टेम्पल्स वाला आगे जब हम इंडियन आर्किटेक्चर, व्हेन वी स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, देयर हैव बीन डिफरेंट आर्किटेक्चर्स associating with the forts, associating with the temples, associating with any other village and concept. So what we can do is we have to just understand the temple architecture of India, right? इंडियन आर्ट एंड कल्चर का टेम्पल आर्किटेक्चर समझोगे एक दिन में. और उस टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले देखोगे कलिका माता टेम्पल किस स्टाइल का टेम्पल है. गुजरात में कंस्ट्रक्टेड है तो नदन टेम्पल है आपका, या सदर्न बेस्ड द्रविडियन टेम्पल है. नागर स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल है, कौन सा स्टाइल का टेम्पल है, राइट. स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है. फिर आपको देखना है कि क्या कोई और टेम्पल है जो आपका न्यूज में देखने को मिला. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला इशू आया था, राइट. उस टाइम पे सबरीमाला बहुत इंपॉर्टेंट था. There have been multiple and ample of questions based on the Sabrimala temple that have been discussed at that particular moment, right? Temples होते हैं भैया मंदिर. मंदिर के ऊपर प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है. और जब परीक्षा में टेम्पल से कोई प्रश्न आए, मंदिरों से कोई प्रश्न आए, तो आप एक ध्यान जरूर दें कि उनका निर्माण किस आपकी जो स्टाइल है उसमें हुआ है, राइट. यस, इज दैट क्लियर? ना मुकुंद का एग्जाम्पल आया कि मैम खजुराहो की बात हम कर सकते हैं, वो पंचयातन स्टाइल पर बेस्ड है. तो इसमें मुकुंद आपको अब ये आधे बच्चों को ही नहीं पता कि वो कौन सा स्टाइल है. सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग
that when this topic Kalika Mata have been seen and this was inaugurated by the Narendra Modi Sahab, then what we can do is, which we can refer to just the temple architecture in detail, right? So topic note कर लो for today, temple architecture. History का है, कल की छुट्टी है, कम से कम 10 टॉपिक आज बता के जाऊंगी, कम से कम 10 टॉपिक आज बता के जाऊंगी. कल की छुट्टी है, परसों की क्लास में आने से पहले 10 टॉपिक अपने खत्म हो जाने चाहिए, राइट? या Absolutely, Sonu, Kajal and Bharat. Moving ahead, these 3 students are very decent students. बिल्कुल भी क्लास के अंदर न्यूसेंस नहीं क्रिएट करते, शांति से क्लास लेते हैं. चलो, this is the Enjoy Kids saving account, guys. Up now, the involvement of kids. See this point and note this down. When there will be initiatives associated with the government and the banking structures themselves for promoting the financial inclusion, then you can refer to this point that Enjoy's Kids Saving Account was also seen in news with respect to the opening of the kids account with amazing benefits. This will be offering the loan facilities, the debit cards, the credit cards to the kids with the we would say whole of this will be dependent on what the father or the mother or the guardian will be concerned of. न्यू पार्लियामेंट रेफर 64 योगिनी टेम्पल, बिल्कुल रेफर न्यू पार्लियामेंट स्ट्रक्चर पे 64 योगिनी टेम्पल को रेफर कर सकते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल क्या है, राइट? इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है मैम हमको? आईएएस पीसीएस में इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़नी है, नेशनल इनकम के बेसिक्स पढ़ने हैं, है ना? बहुत सारी चीजें पढ़नी है. चलो हो गया. क्या क्या बोलते हो कभी कभी तो पता नहीं क्या क्या बोलते हो सच में. पेशल, यस, नाउ इज दिस क्लियर? ठीक है, बैंकिंग से क्वेश्चन आ गया समझ में. किसी बैंक ने देखो कोई नया इनिशिएटिव किया है, कोई मर्जर किया है. वैसे तो बैंक वाली न्यूज बहुत कम आती है एग्जाम में. When we talk about our examination that we are aiming to at the IAS and the RAS level examinations, the banking questions are not so much asked. The mergers and are not so frequent questions that have been asked. But what we can do over here is, हाँ वो मैं शैली ही याद कर रही थी. Thank you so much, Captain Aksh. That's the Nagar Shailee, the Dravid Shailee, the Besar Shailee. Right? That's important. Right? No, Shubham, it's fine. It's fine. Yeah. Okay. Exactly. So what we were doing is, what I was telling you, bank mergers. Bank mergers की बात मैं बता रही थी. अभी हमारे एग्जाम्स के लिए important नहीं है. But those who are preparing for the banking examinations, PO examinations, please keep this in mind that these mergers are very, very important for you. If some of the bank has launched some special card, then that is also very important. That recently some banks have launched some beneficial cards to the health sector. हेल्थ में इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कुछ बैंक्स ने कार्ड्स लॉन्च करना स्टार्ट किया था, तो वो चीज आप कंसर्न याद कर सकते हो जिसमें HDFC एक्सिस वर टॉप बैंक्स टू प्रोवाइड दैट. So you can just refer to these points and these questions with perspective of what whenever you'll be considering the major mergers, right? Kamakhya temple for the Ambubachi festival in the Guwahati. Exactly. Very nice. I'm very impressed, Sonu, with this point. HDFC was the first bank. HDFC first भी न्यूज में था, बिल्कुल न्यूज में था. HDFC first. Kodak Bank न्यूज में था, Kodak Mahindra. So there were a lot of banks that were seen in news. But nowadays I'm not including those points of the banks up. पहले मैं बैंकिंग न्यूज भी लेती थी, अभी क्यों नहीं ले रही हूँ बैंकिंग अफेयर्स न्यूज में? बिकॉज हमने देख लिया पेपर्स के अंदर कि आपके काफी कम बैंक्स हैं जो आपके मतलब अगर हम बात करें क्वेश्चन बेस्ड आता है. बैंकिंग में सेंट्रल बैंक से क्वेश्चन आ जाएगा, बट ऐसे नहीं आएगा, राइट? जी टिंकू जी, थैंक यू सो मच. SS शिंदे हैं चीफ जस्टिस. एब्सोल्युटली हर्षिता. Yes, PAMPE card for below 18 candidates. Now guys, with reference to the Chief Justice, one thing that's important with reference to the Chief Justice is there can be questions associated with how many Chief Justice and Justices are there in a particular court, right? Now here we are talking about the Rajasthan's reference, so we can refer to who was the ex-Chief Justice, right? Who has been commissioned as a new Chief Justice, who has made his appointment. अब इसमें क्या करना है?
इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स बेस्ड ऑन दिस प्रोविजन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। क्लियर हुआ? चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट या चीफ जस्टिस से एसोसिएटेड जितने भी आपके आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोविजंस हैं वो आप याद कर सकते हो, ठीक है? वो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न आपका बन जाएगा, राइट? संभाजी शिवाजी शिंदे, एब्सोल्युटली करेक्ट। राजस्थान करंट अफेयर्स के एमसीक्यू भी करते हैं क्या आप यूट्यूब पर? नूरज जी मंडे को करेंगे सुबह 10 बजे, राइट? ऑन मंडे मॉर्निंग एट 10 AM we will be doing the MCQs associated with the Rajasthan and the India current affairs. ठीक है? जो ये अभी क्वेश्चन बता रही हूँ प्लीज ध्यान रखना, इन पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, है ना? और मंडे को भी आएगा, ठीक है? ओके, यस। हमें जो भी गलती कमेंट किए हैं मैम उसके लिए सॉरी मैम, आप गलती कमेंट नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस यू मैम, आई एम सॉरी। ओके शुभम, मूविंग अहेड। एस शिंदे चीफ जस्टिस, राइट? Yes, Qureshi was the old one. Okay. Right, great. चल. Next. देव नारायण पशुपालक आवास योजना. Why is this Dev Narayan Pashupalak Awas Yojana important? Guys, see. Have this look perspective. Government. Economic review में क्या देखा था? 3 सेक्टर्स देखे थे. एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योग और सर्विसेज। टर्शरी कर दूं इसको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है? वी हैव सीन दिस primary, secondary and tertiary sector, that is the agriculture, industry and service sector. And in the agriculture sector we have seen that there have been a constant rise from past 2 years. People from the industrial sector are now moving towards the agriculture sector. ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। Yes, यहां मैंने आपको बताया था कृषि, उद्योग, सेवा, 3 क्षेत्र हमने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आर्थिक समीक्षा के अंदर देखा था, बिल्कुल देखा था। सो इन दीज पर्टिकुलर 3 सेक्टर्स गाइस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड? दैट वी हैव सीन दैट there was a constant fall in the industrial sector and a rise in the agriculture sector due to the migration of the workers, right? Now in briefing of this agriculture sector guys, we have seen that this agriculture sector was further enhanced to many other sectors, in which what was included? Animal husbandry was included, horticulture was included, and a lot many things were included. Pisciculture was included, associating with the poultry farming. Poultry farming was included, right or not? So we can refer to that the government is doing constant efforts to boost the primary sector of India. Yes, क्या है ये? 45.10, 23.67, 31.23. Confused in data. Okay, ठीक है, confusion data में वो clarify कैसे करना है, वो उसके लिए ट्रिक है ना? ये जो ट्रिक थी ये मैंने इकोनॉमिक रिव्यू वाली क्लास में बता रखी थी बच्चों को। ये जो 3 डेटा वाली ट्रिक थी और बताया भी था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद करना उसमें से, ठीक है? 214 फॉर द रेगुलेशन ऑफ द हाई कोर्ट, एग्जैक्टली स्टेट हाई कोर्ट का रेगुलेशन आपका 214 से मेंशन्ड है। आप देखो, एक सिंपल सी चीज समझना, जब स्टेट हाई कोर्ट पढ़ रहे हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ना, देन हाई कोर्ट पढ़ना, एंड देन गो फॉर दी सेशन और द डिवीजन कोर्ट्स। तो पूरा कोर्ट वाला जो सेगमेंट है वो एक बार में क्लियर हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, इट वोंट टेक मोर देन 5 hours और 6 hours। तो कंप्लीट करने के लिए इधर रेफर टू लक्ष्मीकांत ओनली, आपको मेरे हिसाब से 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन अगर ये तीनों खत्म हो जाते हैं तो आपका जो कोर्ट एसोसिएटेड आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, राइट? इज दैट क्लियर? यस, कोई बात नहीं पेशल, कोई बात नहीं। सेकेंड सेक्टर की ग्रोथ डिक्रीज हुई थी, एग्रीकल्चर में इंक्रीज ज्यादा हुआ था। यस यस पेशल, यस हर्षिता,
इंडस्ट्री डाउन ड्यू टू दी कोरोना इफेक्ट्स, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका प्रोडक्शन भी कम हुआ था, तो माइग्रेंट वर्कर्स ने भी क्या किया, अपने घर जाकर वापस एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना शुरू किया. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. राइट, तो अब याद रहेगा आपको ये देवनारायण पशुपालक आवास योजना से एसोसिएटेड चीजें किसके लिए थी, ये आपके गवर्नमेंट एफर्ट थे किसके अंदर, आपके एनिमल हस्बेंड्री को बूस्ट करने के लिए. और हमने देखा था कि इंडिया के अंदर भी राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, देयर हैव बीन सम स्टेट्स, सॉरी, इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं दैट आर एसोसिएटेड नॉट विद द एग्रीकल्चर रादर देन दे आर एसोसिएटेड विद द एनिमल हस्बेंड्री. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर वी हैव सीन द सदर्न राजस्थान स्टेट्स. राजस्थान में जो सदर्न राजस्थान स्टेट्स हैं, और मैं कहूंगी बेसिकली जो आपका साउथ वेस्ट वाला रीजन है, दैट इज एसोसिएटेड विद द एनिमल हस्बेंड्री. राइट, यस. लक्ष्मीकांत, एनी सेकंड प्रेफरेंस? देखो, पहले अगर लक्ष्मीकांत में दिक्कत हो रही है तो ऐसा करो, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो 6 से 12 तक की. ठीक है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एनसीईआरटी पढ़ो. अब इसमें जैसे 11th 12th में क्या हो जाता है, 11th में आता है कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आएगा आपको बेसिक्स. 12th में देयर विल बी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस कंपैरिजन एंड देयर केस स्टडीज. So what you can refer to? You can refer to from 6th to 10th NCERT is associated with the political science, and then you can just go through the 11th class NCERT and opt for either DD Basu or Lakshmikant for the Indian polity. You can refer to DD Basu also. अगर ऑथर्स की बुक्स की बात करें, DD Basu और लक्ष्मीकांत दोनों अच्छी है, दोनों बुक्स अच्छी है. ठीक है, yes. बाड़मेर on the first, followed by बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर. yes, ठीक है. हाँ मैम, हमारे लक्ष्मीकांत की बुक है मैम, तो लक्ष्मीकांत अगर है तो उसी से पढ़ना, दैट इज द बेस्ट थिंग. नाउ if I would like to ask you the place associated with this Devnarayan Pashupalak Awas Yojana, from which district this particular scheme was or yojana was initiated, what will be the correct answer? Yes guys. Anyone? Anyone? कोई भी बताना चाहेगा? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां से ये योजना शुरू की गई? एब्सोल्युटली ट्रू सूर्य, कोटा. कोटा करेक्ट आंसर. सूर्या वेरी नाइस. काजल वेरी नाइस. भाग्यवती जी गुड मॉर्निंग. Every day the Times class starts at 10 a.m. in the morning. This current affairs session is at 10 a.m. in the morning, and you can attend these sessions daily. There's no break. Daily classes होती है. Right? Daksh, a very good morning. Kota, Rajasthan is associated with this scheme. Next news headline, Union Minister Hardeep Singh Puri launches Nipun for promoting upskilling of the Nirman workers. Upskilling, skill development, construction workers, migrant workers, factory workers, सब important है. कोटा से ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर थे. बिल्कुल इन्होंने सुपोषित मां अभियान शुरू किया था for the pregnant women and the adult girls, or we can say the adolescent girls, for the proper nutrition. तो वो भी आप याद कर सकते हैं. ठीक है सूर्या. कोटा कहां पर है? कोटा है आपके राजस्थान में, है ना. कोटा आपके राजस्थान में, कोई दिक्कत नहीं है. राजस्थान का मैप एक बार पढ़ लेना, करा रखा है मैंने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लासेस में, वहां से आप पढ़ सकते हो राजस्थान के बारे में. राइट, यस. So here we are talking about Hardeep Singh Puri ji, who have recently launched one thing that is being associated with what? In association with what? Nipun. Nipun is targeting the Nirman workers or the construction workers.
We are targeting here what? The construction workers. So whatever the construction workers are associated with, this will be taken into strict consideration, that we are going to upskill them so that their work will be enhanced, the government's work will be improvised, and later on we can just observe what we can clearly observe, that there will be a pay or the raise high or a wage high in their income, right? Thank you for the economic survey explanation video. सब clear हो गया. Thank you so much निखिल. यही चाहिए कि आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना? थैंक यू. डेली क्लासेस लिया करो और बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी और नॉट, आई गेस 1.5 घंटा हो गया है क्लास चलते चलते, बट इनमें से एक भी लर्नर अभी बोर नहीं हुआ होगा. मैं खुद नहीं हुई हूँ, है ना? ये सेम टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते तो बोर हो जाते हैं. मैं खुद नहीं हुई तो लर्नर्स तो कैसे होंगे? This is a very interesting session which we are going to conduct every day. Yeah, Nippon. One more thing that's important with reference to the Nippon, that it was associated with the new national education policy, which was launched in the year 2020. And in the previous classes, Special has given the reference, right? I remember the name. He has given the reference, ma'am, that Nippon is associated with the education system and the education policy. हाँ जी, ये निपुण बताती हूँ हर्षिता, ठीक है? वो जो निपुण है दैट इज एसोसिएटेड विद द एजुकेशन. अभी हम जिस निपुण की बात कर रहे हैं वो क्या टारगेट कर रहा है? ये एक इनिशिएटिव, एक योजना के अंदर आएगा, ठीक है? ये कोई पोर्टल नहीं है, स्कीम की तरह लॉन्च किया गया है, ठीक है? ये एक स्कीम की तरह गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है कि इस स्कीम के अंदर हम अपस्किलिंग करेंगे लेबर्स की, राइट? यस, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली ट्रू. So that's what we need to understand, that Nippon's firstly Nippon's full form, ये मत भूलना. This is the national initiative for promoting the upskilling of the Nirman workers. I could have used the word construction workers in the place of Nirman workers, but that would have made a different sense now, right? 1987 started one report, and 1987 first one report by the FSI Dehradun. मैम आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया है मैम, ठीक है, ठीक है. Yes. So it is under the Ministry of Housing and Urban Affairs that this particular Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission Day NULM to trade over 1 lakh construction workers through fresh skilling and upskilling programs and providing them with work opportunities in the foreign countries also, which we can refer to, that when we refer to something associating with the foreign working staff or foreign work culture, तो एक चीज मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, that the job opportunities that you are going to get in the foreign countries will be of high pay scale, not based on the monetary value. कि आप ये कह सकते हो कि मैम यहाँ के अगर हम बात करें तो आपके 78 रुपीज के अंदर हम $1 खरीदते हैं, तो अंडरस्टूड सी चीज है कि वहां पे आपको इनकम ज्यादा ही होगी when you convert it into the INR. No, I'm saying the service sector over there, जहाँ पे आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, and we can refer to the construction workers, the agriculturist farmers, the plumbers, the electricians, the mechanics, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. निपुण का मतलब ये है कि उन्हें पूर्ण तरह से परफेक्ट कर देना. They will be trained in every manner, they will be trained in such a manner कि उनकी हर एक स्किल एनहांस हो जाएगी. ईंट के ऊपर ईंट भी वो सीधी लगाएंगे, सीमेंट भी वो प्रॉपर पॉलिश करके लगाएंगे, फ्लोरिंग भी प्रॉपर होगी, हर चीज के लिए उनको स्किल्स सिखाई जाएगी, राइट? अंत्योदय सेंटर फ्लैगशिप स्कीम लाइक राजस्थान, एग्जैक्टली. यस, यू कैन गेट द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. यस गाइस, next is Nippon project. This will enable the construction workers to seek better opportunities. Guys, understood सी चीज है, सिंपल सी चीज है, याद रखना. आज अगर मैं कोई इनिशिएटिव लेकर आ रही हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आज शाम को मैं क्लास कंडक्ट करूंगी, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कर नहीं रही हूँ, in that particular class I will be taking up the 2021 and 2022 current affairs associated with the state of Rajasthan, right? So what will you all do? You will attend the session. My agenda on taking that session is that कि उसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए और मेरे लर्नर्स को उसकी हेल्प मिले. तो हर एक स्कीम, हर एक इनिशिएटिव के पीछे एक एजेंडा होता है, एंड इफ दैट एजेंडा इज स्ट्रॉन्ग, देन जो आपका इनिशिएटिव होता है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है.
Government's agenda of building these skills in the people is to give them employment. If they will be skilled, they will automatically get the employment. उनको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी. आज अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूं तो I have open platforms available that I can teach to on. Right? That's the simple thing. If you are knowledgeable, you can get access to the papers, you can get access to the interview and everything. आपको आपका जॉब मिलेगा, डिजायर्ड जॉब. अब जब वो सीखने में एफर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी सक्सेसफुल हो रहा है और उन्हें एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली मिल रहा है. और ऐसे गवर्नमेंट बिना स्किल्स सिखाए उनको एम्प्लॉयमेंट दे देगी तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है दैट विल बी ऑफ नो यूज. इफ वी वांट दैट एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोडक्टिव, हम उसको पहले सिखाएंगे कि 2 कमरे कैसे बनाए जाते हैं. हमने उसको सिखा दिया कि 2 कमरे का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, देन ही विल बी कंस्ट्रक्टिंग दी बिल्डिंग्स एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर. that building will be retaining for more than 20-30 years. And that's what we need. That's what we need. If you are contributing to something, we should get the return of it. Right? Yeah. So moving ahead, I hope that's very clear to you. Nipun scheme for the construction workers. Skill India ले लो, Startup India ले लो, निपुण ले लो, बहुत सारी है. अभी एक वो भी तो थी. I just name just skipped my mind. एक और scheme है that is associated with the development of skills in the migrant workers. That's also very important. Skipped through my mind. याद आएगी तब बताऊंगी अब. ठीक है. Next, बेंगलुरु स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. बेंगलुरु के अंदर B.R. Ambedkar School of Economics is very, very important. Why it is important? Because as I have let you know that we need to enhance these centers of education. सरकार क्या कर रही है? एजुकेशन सिस्टम पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे देन आवर फ्यूचर रिसोर्सेज एंड दी ऑल्टर्स वी कैन रेफर टू, जो भी चीजें हम फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं वो कैपेसिटी हमारी अभी खत्म हो जाएगी. इसलिए नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट देयर हैव बीन कांस्टेंट एफर्ट्स टेकन अप बाय द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन टू द पीपल, टू ऑल द गुड लर्नर्स एंड एवरीवन. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पे हम क्या बात करते हैं कि भैया इसको जो है ग्राउंड रूट लेवल से अच्छी पढ़ाई दी जाए, अच्छा इसको सिखाया जाए. तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? आपके अच्छे एजुकेशन सेंटर्स पे ध्यान दे रही है ताकि वहां से ही हमें एजुकेशन मिले, हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो. यस, दैट वाज माय क्वेश्चन which I was supposed to ask. So Surya is saying that ma'am, we have this university associated with B.R. Ambedkar on the subject of law. So where is this university located? B.R. Ambedkar की बात मैम आपने की, बिल्कुल की. B.R. Ambedkar इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की बात मैंने की. कहाँ पे है मैम? बैंगलोर में है. लॉ की कहाँ है बताइएगा जरा. लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी. इकोनॉमिक्स वाली बैंगलोर में है. लॉ वाली कहाँ है बताइए. चलिए फास्ट जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दीजिए. जयपुर की कल्याण योजना. नहीं याद ऐसे नहीं याद आएगा. बता भी रखी है मैंने क्लास में, पर तो क्लिक नहीं करेगा ऐसे. कोई बात नहीं, देखते हैं. जयपुर में, हाँ जी बिल्कुल जयपुर. जोधपुर. 2-3 आंसर आ गए हैं भैया, बता दो कौन सा सही है. 2-3 आंसर आ गए हैं, कौन सा सही है ये तो बता दो. यस ओके ग्रेट. चलिए ठीक है. सो एसोसिएटिंग विद द लॉ इट्स द जयपुर यूनिवर्सिटी. इतना डिटेल में नहीं पता है कैप्टन अक्ष. जयपुर एंड एसोसिएटेड विद दिस इज द बेंगलुरु कर्नाटका. राइट. लॉ यूनिवर्सिटी बता दिया ना शुभम. नॉट गोइंग ऑन द एड्रेस. ओके. सो नाउ व्हेन जयपुर वाज सीन इन न्यूज, सिर्फ एक हिंट दे रही हूं,
बाकी के आंसर आप बताएंगे। प्लेस इज जयपुर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द डेजर्ट पार्क। नेम एंड एरिया, अपना जयपुर बिल्कुल सही है। RJ 14 करेक्ट आंसर। मैं सबको बता रही हूँ, ये सूर्य से डिस्टेंस मेंटेन करो। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, उससे पहले वो आंसर दे देता है। नेम इज किशन बाग। दिस इज द फर्स्ट डेजर्ट पार्क associated with the Jaipur being constructed into the VDN, that is the Vidyadhar Nagar region of Jaipur. Yes, Kishan Bagh is the correct answer. Associating with Jaipur, one organ donation center was also built in Jaipur. जयपुर में बिल्ट हुआ था, लेकिन कहां? Where exactly? We have discussed this. है ना? Yes. VDN 50 rupees का टिकट प्राइस बाय द जीवस पार्क। एग्जैक्टली। कल्याण योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? ठीक है। Yes, exactly. You have been there. Very nice. So Central Park, Jaipur is associated with the organ donation park of the state of Rajasthan. So you can refer to Jaipur's Central Park. Next question. World's third largest cricket stadium being built by whom and where? Central Park is the correct answer. By whom and where? Nearby to SMS. Yes, exactly, near to SMS. Right, correct. Near to SMS is the correct answer. बताइए क्या इसका रेफरेंस क्या होना चाहिए? चौप जयपुर, ठीक है। Note this name down too. Hello Sita ji, welcome to the class. Yes, Chop Jaipur and the responsibility of Vaibhav Gehlot, right? Next, देख लिया ये कर्नाटका का, याद रखना। देखो एक चीज और याद रखनी है, इसको नाम क्या दिया गया है? बेस। ठीक है, बेंगलुरु स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जी शुभम जी, कैप्टन आश जी, RCA को दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फॉर दैट यस। अच्छा तो चलो उससे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसका पुराना नाम क्या था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? यस, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? बताइए जल्दी जल्दी, पता बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मोटेरा स्टेडियम, यस। अब फटफट देखते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, बहुत ही सारे टॉपिक्स बचे हैं लिटरली।
चलो, yes, a quick revision now. Quick, or you want 2 classes of it? One question or a query, as a lot of content is left right now. You want 2 classes associated with it, or you just want 1 class? If you want 2 classes, I can take 1 session tomorrow also. बताइए, 2 क्लासेस चाहिए या 1 क्लास में काम हो जाएगा? मतलब या तो आज करना है, जल्दी जल्दी थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, या अगर चाहते हो तो क्विक एक सेशन अभी इसको ओवर करते हैं within 10 minutes, and then we are going to conduct 1 session tomorrow or any other day. If you have this interest of studying this for 2 days consecutively, I am ready. Whatever you like. There have been just 2 votes right now. एक वोट आया है कि क्विक करा दो और एक कह रहा है कि 2 क्लासेस में. तो बताइए, 1-2 वोट्स और कर दो so that I will get to know 2 classes. काजल जी भी कह रही हैं कि मैम 2 क्लास में करवाओ. So 2:1 चल रहा है अभी. क्विक वाला कोई और है? कोई बात नहीं. रेनू जी भी कल का कह रहे हैं. ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, 2-5 न्यूज हेडलाइंस और देखते हैं, बाकी की कल कर लेंगे. ठीक है, ठीक है शुभम जी, 2 क्लासेस कर लेंगे. मुकेश जी, अब वोटिंग हो गई है, द डिसीजन हैव बीन टेकन. खाली 2 ही बच्चे हैं क्विक वाले, एक आप और एक सूर्या. ठीक है मैम, 2 क्लासेस करने हैं मैम हमको भी. ठीक है, ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू यू 2 days. ठीक है, ठीक है, नोटेड नोटेड. सो स्लो एंड स्टेडी. कल संडे है मैम, अकॉर्डिंग टू मैं क्विक करवा देते हैं. अभी क्विक में भी सूर्या बहुत सारी स्लाइड्स रिमेनिंग है ना, क्विक में भी बहुत सारी है. बता देंगे, कल ले लेंगे, वरना परसों जो क्लास है उसके बाद में 1 क्लास या पहले 1 क्लास कंडक्ट कर लेंगे. ठीक है, करवा देंगे. नॉट क्विक, ओके. A book titled Gautam Adani, The Man Who Changed India was written by R.N. Bhaskar. Guys, ये याद रख लेना that the authors and their books play an important role, right? Authors and their important roles and their books is very, very important. Now, as it has been a book written on the Gautam Adani, it plays a very important role, right? So, all you can do is you can just pay attention to the efforts given by Gautam Adani in building up the economy of India, right? Along with that, you can just focus on some of the perspective associated with the particular segments of Gautam Adani and this R.N. Bhaskar. तो इसमें एक चीज याद रख लेना, बस बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट बना लो करंट की, और ऑलमोस्ट 8-10 तो मैं ही करवा चुकी हूँ. In just June, I guess 15 books have been discussed in our classes by me. So you have 15 books in the month of June and their authors just been like we have discussed them in our classes. So you can just go through the classes. This is the 3rd weekly series class. तो आप उनको cover करते you can cover कर सकते हो, मतलब you can just do it, right? Yes. अडानी जी ने अभी दान करने के लिए भी बोला है न्यूज में. बिल्कुल, इन्होंने कहा है कंट्रीब्यूशन देने के लिए. अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं दैट for example, Bill Gates, one of the richest man, along with the richness, he is rich from the heart too, as he is doing a lot of contributions. It's not important just to have money, it's important to contribute that too. Ratan Tata, highest contributions ahead, right? So it's important if we note those points down, because social service perspective में भी आप इनको एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिख सकते हो. मैम हमको भी यूपीएससी में टॉप करना है मैम, प्लीज आप हमारी कोई हेल्प कर दीजिए ना मैम. शाबाश मिट्ठू, बायोग्राफी मूवी ऑफ मिताली राज. ओके, ठीक है जी. यस, शाबाश मिट्ठू मूवी ऑफ मिताली राज. अच्छा, देखने जाना जरूर से, बिकॉज मिताली जी हैज गिवन अ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, विमेन क्रिकेट, सो वी कैन जस्ट गिव इट एन ऑब्जर्वेशन. और अभी जो आप देखेंगे ना, वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन ओवर हियर, जो ट्रेलर आया है, in that it has been seen that how women was not empowered at that moment. For women to fight in sports was very difficult, which has been depicted in the movie Chak De India as well, and in this movie of Mithali Raj, that is Shabash Mittu. It has been depicted a lot of time that for women, the struggle in these sports or for the standing of the society is very, very difficult. So to stand amongst the leaders, to stand in front of them, to stand along with them,
what we can do is we can just fight for our rights. Next is US Canadian author Ruth Ozeki wins the Women's Prize for Fiction, which is an important news headline. In what? Authors and books, right? यार मेरे को शौक है मूवीज का, है ना, इसलिए मैं प्रमोट कर देती हूँ थोड़ी बहुत. तापसी पन्नू है ही, गजब. नहीं भरत, एक ही क्लास है, कंटिन्यू चल रही है अभी, है ना, एक ही क्लास थी, कंटिन्यू चल रही है. चलो, okay, let's not waste the time because it's very much left right now. Yes, the next news is the IISC Center for Brain Research officially opened by PM Modi. So guys, now you need to keep in mind that IISC, Indian Institute of Sciences, was seen in news for a long of time. एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एशिया की द ओनली यूनिवर्सिटी विच हैज बीन इन द लिस्ट ऑफ टॉप 50 इज दिस यूनिवर्सिटी. IISc Bangalore is for the second consecutive time representing Indian universities to a great extent in the world, right? So it's important कि हम इन फैक्ट्स को याद रखें, right? फिक्शन तो जॉनर होता है ना, फिक्शन क्या होता है? जॉनर होता है, साइफाई, राइट, जॉनर, राइट. इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए इकोनॉमिक्स से. शुभम वो कभी क्लासेस कंडक्ट करेंगे तब बताएंगे, ठीक है. इंडिविजुअल अभी एक क्लास में मैं नहीं कह सकती कि आप ये पढ़ लो. आप डेली क्लासेस लोगे तो आपको डेली टॉपिक्स पता चलेंगे, ठीक है. ऐसा नहीं होता कि मैं एक क्लास में आऊँ और मैं आपको ये बता दूं कि आपकी ये चीजें हैं, आप पे पढ़ लो. नहीं होता ऐसा. If I'm discussing some topic associated with the IISc, then I will be marking you down that IISc ही नहीं, आप इसके साथ में जितनी भी आपकी IITs हैं, IIMs हैं, if they have been seen in news that last year IIM Udaipur was seen in news for the infrastructure, right? So you can just connect with all these universities associated with the government if there have been any achievement being made by them. That last year if we discuss, there have been a lot of IITs doing a lot of initiatives. IITs ने काफ़ी आपके initiatives करे थे, उन initiatives को हम consider कर सकते हैं. उसका एक content मेरे पास में बना हुआ है. If you want that, I will share it with you. Right? हाँ जी. वीडियो मेंस के लिए एंड मोमेंट, लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी, 5 मिनट दो, 5 मिनट्स, फिर बताती हूँ, ठीक है. 5 मिनट्स भरत. So this is at the Bangalore, right? And very importance. Yes. Okay, Mukund. Let the indexes come once. There have not been much indexes. आधी से ज़्यादा indexes 2021 वाली है. February से indexes आना शुरू हुई हैं. It's just the month of June. Let few more indexes come. Like by August, we will be having abundance of the indexes. So let them come, then we will conduct this session on the recently released indexes. ये मैं करती हूँ, ये मेरा strategy यही है. एक बार में साल के अंत में जितनी आपकी स्कीम्स आई है उसकी क्लास हो जाएगी और recently released indexes की हो जाएंगी, ठीक है. Yes. So this is important. Brain Research Center is very important with reference to the IISc Bangalore. Now guys, any other research center which have been developed by the government in the past year is important with reference to this news headline. Any research center, be it any, भले वो ये बोल दे कि आपको एक चीटी के ऊपर रिसर्च सेंटर सरकार ने यहाँ खोला है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. हाँ सूर्या, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके. अगर सरकार बोलती है दैट अगर हम ये सो एंड सो जगह पर हमने ये रिसर्च खोला, जैसे हमने डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात की थी पटना यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड, फिर हमने बात की काफ़ी और रिसर्च सेंटर्स की, हमने गोवा में अंदर रिसर्च सेंटर की बात करी, हमने ये रिसर्च सेंटर और देख लिया. सो व्हाट वी कैन डू इज अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द रिसर्च सेंटर्स वी कैन से दैट इन द राजस्थान ऑल्सो देयर हैव बीन डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च सेंटर्स प्रीवियसली, ठीक है. अब वो किसका एक रिसर्च सेंटर बना था, कौन सा ग्रेन था जिसका रिसर्च सेंटर राजस्थान से न्यूज में रहा है, Which grains research center, क्या बात है, बाजरा अनुसंधान केंद्र, मिलेट रिसर्च सेंटर, एब्सोल्युटली ट्रू. कहाँ बना है, where has this बाजरा और मिलेट रिसर्च सेंटर being established at in Rajasthan? Yes. कहाँ बना है बाजरा अनुसंधान केंद्र? Yes, Ocean and Polar Research Center in the Goa. Absolutely, Bharat. बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है बताइए.
रिसर्च सेंटर का क्या मतलब है? शुभम जी एक बात सुनिएगा, इफ यू वांट टू क्लियर द आईएएस एग्जामिनेशन डोंट आस्क डम्ब क्वेश्चंस। रिसर्च सेंटर क्या होता है? जहां पे रिसर्च होती है। हमें रिसर्च भी बताऊं आपको कि रिसर्च कैसे होती है? थोड़ा क्वेश्चन तो लॉजिकल पूछा करो, बताओ। यहां कोई लैंग्वेज बार नहीं है, जो आपको समझ में आए वो क्वेश्चन पूछो। एग्जैक्टली, इट्स एट दी बाड़मेर, बाड़मेर एंड फॉर दी बाजरा। अच्छा, बाजरा ईयर के लिए कौन से ईयर की बात की गई है? बाजरा ईयर कौन से ईयर की बात की गई है? Absolutely, Mukund. Very nice. Very nice. 2023 as the millet year being declared. Exactly. Mukund, very nice. हर्षिता नाइस। काजल जी अपडेट कर लो, बाजरा कहां पर है? बाड़मेर में है, बीकानेर नहीं है। ठीक है, यस। चलो, वेरी नाइस। यस एग्जैक्टली, सरसों और मस्टर्ड इज कंसर्न्ड विद द भरतपुर रीजन। वेरी करेक्ट। चलो, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देख सकते हैं आपके हॉस्पिटल्स भी बनेंगे इसी रिसर्च सेंटर के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है। Next news is associated with the guidelines for the public hearings, right guys? This was the news that was seen. Now what is my question associated with this? That you can refer to all the redressal portals that the government has aimed at. अब इसमें आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी नाम दे सकते हैं। दैट अगर मैं आपसे इसमें मेंस का क्वेश्चन पूछूं, दैट व्हाट कैन बी द मेजर इनिशिएटिव। अरे वाह, वेरी गुड। भरत ने भी अच्छा आंसर दिया है, दैट 2023 इज द मिलेट ईयर। ओके भरत, भरत कह रहे हैं मेरी भी तारीफ करो क्योंकि मैंने भी सही आंसर दिया है। ठीक है भाई, भरत ने भी सही आंसर दिया है। यस भरत। So now guys, what I was saying was association with the mains answer writing, right? Whenever we talk about any of the guidelines that the government has been issuing, right, regularly, government is now issuing the guidelines for the redressal of the public grievances. So what we can do is every portal that is associated with the redressal of the public grievances or problems will be considered into account. So आप देख लीजिएगा कितनी है आपके कंज्यूमर रिड्रेसल पोर्टल्स, कौन कौन से हैं, किस किस लेवल पे हो रहा है, लोकल लेवल क्या है, स्टेट लेवल क्या है, इंटरनेशनल लेवल क्या है, सब लेवल के ऊपर जो भी आपका होगा उस पे हम बात करेंगे। इज दैट क्लियर? यस, आपकी भी लक्ष्मण जी ने भी भैया कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, वेरी नाइस। विजय पथ, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। Who said this? Very nice, Mukund. Very nice. मुकुंद ने एक लाइन बोली है which has been said in the history. मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। For a handful of millets, I would have lost the autocracy that I have, the hold that I have in this whole India. Who said this? Yes, very, very nice statement and a very, very nice question. Sheshasuri on Giri Sumel ka युद्ध. Who fought this Giri Sumel war? गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? Absolutely true. None other than Sheshasuri. None other than Sheshasuri. Sheshasuri said this. कब कहा था? कब कहा था? 1544 Sumel battle with whom? Whom did he have this battle with? Giri Sumel. Yes, Sheshasuri. Absolutely true. किसके बीच में हुआ था भैया गिरी सुमेल का युद्ध? Who fought this Giri Sumel battle? 1544. Sheshasuri with whom? कौन था शेषासुरी के अगेंस्ट में? चेता कुंपा, मालदेव राठौर, मालदेव के सैनिक। Maldev versus Sheshasuri. Absolutely true. In which the Sheshasuri fun? मालदेव और शेषासुरी के बीच में हुआ था। ठीक है, रूठी रानी का रेफरेंस भी इसमें आएगा, बिल्कुल सही। मालदेव वर्सेस शेषासुरी एंड इन विच दी सुरी वन, बट आफ्टर द वॉर ही सेड दैट ये क्या कर दिया मैंने, राइट? हाँ, गलत आंसर है जैत्र सिंह। मालदेव राठौड़ आंसर। शाबाश, वेरी नाइस।
So do you want to have a question session round associated with the Rajasthan culture or current affairs? जैता कुंपा नहीं थे जी, आपके मालदेव जी थे. मालदेव राठौर वर्सेस शेषासुरी की बात है 1544. ठीक है, कुंपा की बात अपन अलग रेफरेंस में करते हैं, और ये जो हम लेटर मुगल्स और मुगल्स का रेफरेंस देखते हैं ना, इसको थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है. Yes. Okay, guys. So let's, I hope we should end our session right now. These redressal portals are very, very important. And we are going to continue with our class probably tomorrow or day after tomorrow for this weekly current affairs round. And then on Monday, you will be having a test. Okay? So thank you so much for joining in. Please share this session as much as possible. And then we are going to have this test round in which I want more learners to join. Right? Good afternoon, ma'am. Please suggest the sources for Rajasthan GK English medium from beginning. Anuji, we will be conducting a session soon based on how to start your preparation for the RAS examination. Also, there is a free seminar, guys, which you all can attend and clear all your doubts associated with the RAS preparation on 3rd of July. We have this session at 3rd of July, so you can refer to this free seminar also, in which the batches will be starting from 4th of July. There have been timings: Hindi medium timings 2 to 8 p.m, English medium timings 2 to 8 p.m. The time has not been fixed yet, but there will be batches, separate batches for both the mediums. Right? बिल्कुल बता रही हूँ भरत, 2 मिनट में बता रही हूँ. ठीक है? हाँ जी. So all you have to do is please share this session on your social medias and join this free seminar on 3rd of July at Samyak new building with amazing mentors, amazing toppers, the officers, along with the subject experts. Probably I will be attending this session too. तो सबसे मुलाकात होगी 3 जुलाई को फ्री सेमिनार में. जरूर आइएगा. सम्यक के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा. अब एक हेल्प आप लोगों की कर देती हूँ. वीडियो का पेपर है, ठीक है भरत, एक चीज बहुत क्लियर थी लास्ट पेपर से, जितने भी लोग वीडियो मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वन थिंग वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द लास्ट एग्जामिनेशन दैट ज्योग्राफी पोर्शन वाज सीन इन वेरी मच डिटेल. राइट? तो अभी एंड मोमेंट अगर प्रिपरेशन करनी है भरत, तो 2 चीज पे ध्यान दो. एक तो ज्योग्राफी एसोसिएटेड पोर्शन इन विच यू कैन रेफर टू द प्लेसेस, नेशनल पार्क्स एंड प्लेसेस इन न्यूज एंड सीज. मैंने कहा सीज की बात याद रखना. कैस्पियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज में क्वेश्चंस आए हैं, रेड सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज इन पे क्वेश्चन आए हैं. तो एक तो सीज के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो देख लेना. राइट? एक देख लेना नेशनल पार्क्स of India as well as world which were seen in news. Right? The third thing that is important with reference to the video examinations associated with the geography is राजस्थान की क्या कोई माइनिंग आपका जो है मिनरल रिसोर्स है वो न्यूज में रहा है तो वो देख लेना. कहाँ कहाँ उनकी अवेलेबिलिटी है वो देख लो. ठीक है? ज्योग्राफी पूरा पढ़ लिया. ठीक है, चलो, वेरी गुड. देन गो टू दी it's an offline seminar, right? Yes. Again, one thing that's important. हाँ, वही बोल रही हूँ, इसीलिए ये 3-4 चीजें बताइए ज्योग्राफी से एसोसिएटेड. देन लुक एट द कल्चर. राजस्थान का कल्चर देखना है. इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पोर्शन था उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं. तो फ्रीडम स्ट्रगल कितना, आप बोलोगे कि मैम पूरा ही पढ़ लूं क्या? फ्रीडम स्ट्रगल तो बहुत सारा है, तो नहीं पढ़ना है फ्रीडम स्ट्रगल पूरा. एक तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं वो याद करने हैं. ठीक है? एक आपको जितने गवर्नर जनरल्स और आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनका कोई इनिशिएटिव चीज है तो वो याद रखना है. जैसे सब्सिडरी अलायंस किसका था, रिंग ऑफ फेंस किसका था. राइट? कोई न्यूज़पेपर है जो हमने न्यूज में देखा था, ये इंपॉर्टेंट है. तो हिस्ट्री की बुक उठानी है और एक दिन में सिर्फ फैक्ट्स याद करने हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव पता है आपको, फैक्ट्स का याद करना है. कल्चर देखना है राजस्थान का, जिसमें फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की तिथि याद करनी है. फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की तिथियां याद करनी है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द टेम्पल्स ऑफ राजस्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? इतना करो, बाकी जो आएगा वो देख लेंगे. ठीक है? यस. So thank you so much guys for joining in. Do share this session with your friends and I will see you all very soon. If not tomorrow, then on Monday at 10 a.m. only on Samyak Civil Services and Samyak Civil Services in English
with one amazing session of weekly current affairs, daily current affairs, and along with that, a current affairs test. So thank you so much, guys. Keep learning, keep sharing. Bye-bye. Take care. Have a nice day.